Hello students, here is the first lesson of your standard 7. Name of the lesson is geometrical construction. Geometrical construction, already we have learned some of the things in standard 6 also. In standard 6, first lesson was basic concepts in geometry. Okay, even in another lessons also geometric constructions we have learned. In the same lesson, even angle bisector was also taught. Okay, how to draw an angle bisector just within a few seconds. Just we will revise it. Okay, how to draw the angle bisector. Suppose here is an angle ABC, right? Then how to draw angle bisector? Take sufficient distance in the compass, okay, and make an arc. Make arc at two places, okay. Then adjust the pointer, compass pointer, okay, on the arcs. Then with proper distance, take arc this side, and from here also adjust the compass pointer on the second arc, wherever the intersection took place, adjust there and take a arc, okay. Here due to these two arcs, here we get a point of intersection, okay, and this point of intersection is joined with a dotted line, okay. This is called as angle bisector, right? Already this we have learned in standard 6th. Let us read the information. In previous classes we have learned about the line segment, angle bisector, etc. We measure an angle in degrees. If angle ABC measures 40 degree, we write it as measure of angle ABC is equal to 43. Angle, it's bisector. What is the meaning of angle bisector? This already explained. You see the figure angle ABC alongside. An angle bisector divides an angle into two equal parts. Angle bisector क्या करती है? Angle को two equal parts में divide करती है. Is ray BM the bisector of angle ABC? ये ray BM bisector है क्या angle का? Yes, it is the bisector of angle ABC. Then next point, this point also it is explained in standard 6, perpendicular bisector of a line segment. Okay, अब ये कैसे निकालते हैं? Okay, first a line is drawn, a segment PS is drawn. Okay, then by adjusting the compass point on the point S, okay, take proper distance, and this way, then here to the upper side one arc is taken and downside one arc is taken, right? Then by adjusting the steel point on point P, okay, here arc is taken with the same distance, and again this side arc is taken, right? Okay, because of this we got 2 points, point C and point D, okay, and these points are joined with the help of scale. This is called as perpendicular bisector. Here the measure of the angle is 90 degree. This is called the perpendicular bisector. Let us see what information is given. Draw a line segment PS of length 4 cm. This length of this segment is 4 cm. That also should be mentioned here, 4 cm. And draw its perpendicular bisector. Name it line CD. Perpendicular bisector is drawn, it is named as line CD. Then how will you verify that CD is the perpendicular bisector? ये line CD, ये perpendicular bisector, ये कैसे verify कर सकते हैं? For this 2 points are there. Okay, number 1 is perpendicular. Perpendicular का मतलब क्या है? It should make an angle of 90 degree with the segment PS. Okay, तो ये 90 degree का angle है या नहीं, ये check करते हैं. See this, it measures exactly 90 degree, okay, यानी perpendicular है. Okay, then number 2 bisector, whether it is a bisector or not, तो देखते हैं. Okay, this is of 4 centimeter, okay, and this line passes from exactly from the center 2 centimeter, okay, so this is the perpendicular bisector. How it is confirmed? How we have confirmed? Measure of angle CMS is equal to 90 degree. Okay, here degree sign is there already.
Then is length of PM is this, and length of SM, are they equal? Yes, they are equal. So it is called as perpendicular bisector. Moving to the next point, the property of the angle bisectors of a triangle. What is the activity given? Draw any triangle PQR. PQR triangle is drawn. Use a compass to draw the bisectors of all three of its angles. Extend the bisectors if necessary so that they intersect one another. Okay? यानी ये तीनों जो एंगल है, एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R, ये तीनों एंगल की एंगल बाइसेक्टर निकालनी है. ओके, as even you are learn it in 6th standard, here upside also it is explained. Then these three bisectors pass through the same point, that is they are concurrent. ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर्स है वो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से जाती है. ओके, एंड such lines we means three or more than three lines which passes through one and only one point, such lines are called as concurrent lines. Okay, and their point of concurrence is called as point I. Okay, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? I. You must be remembering in 6th standard it was explained, it is called in center. Okay, then note that the point of concurrence of the angle bisectors of a triangle is in the interior of the triangle. Okay, एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होता है, बाहर नहीं. ओके, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर्स IA, IB एंड IC रिस्पेक्टिवली फ्रॉम I से क्या निकालनी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालनी है. ओके, ट्राइंगल PQ, QR एंड PR. मेजर द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर्स. नोट दैट IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC. ये तीनों भी डिस्टेंस सेम आएंगे. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी इट इज मेंशन हियर इन द पॉइंट 4. ओके, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द इन सेंटर दे आर इक्वल. मीन्स द इन सेंटर इज located at the equal distance from the sides. Okay, the next point is the property of perpendicular bisectors of the sides of a triangle. अब किसकी प्रॉपर्टी देखनी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. किसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, यहां पर एक ट्राइंगल निकाला है XYZ. ओके, और XYZ ये साइड XY को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाली है, XZ को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाली है, YZ की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाली. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट इज एक्सप्लेन इन दिस वीडियो ओनली इन द बिगिनिंग हाउ टू ड्रॉ. ओके, व्हेन सच थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर ड्रॉन we see that these perpendicular bisectors they intersect each other at one and only one point. The name of that point is C. Okay, C का लॉन्ग फॉर्म क्या है? circumcenter. Okay, तो C. Let us read the information. Use a ruler to draw an acute angle triangle and an obtuse angle triangle. Draw the perpendicular bisectors of each side of the two triangles. Second point is given. In each triangle, note that the perpendicular bisectors of the sides are concurrent. This is the main point. Whatever perpendicular bisectors are drawn from the three sides, okay, all those three perpendicular bisectors, they are concurrent. Concurrent means they intersect or they pass through one and only one point. So they are concurrent. Number 3 point is name their point of concurrence as C. Measure the distance between C and the vertices of the triangle. Note that CX is equal to CY is equal to CZ. ओके, यहाँ पर हमें डिस्टेंस मेजर करना है. कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड द वर्टेक्स. ओके, यहां से वर्टेक्स का डिस्टेंस, यहां से वर्टेक्स का डिस्टेंस, यहां से वर्टेक्स का डिस्टेंस. ओके, यहां से
CX, CZ, CY, you will find that all these three distances are same. Means what? From the point C, all the three vertices are located at equal distance. Number 4, observe the location of the point of concurrence of the perpendicular bisector. Okay? किसका लोकेशन चेक करना है, ऑब्जर्व करना है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मिलता है, अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है. ओके, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट ये सेंटर में आ रहा है, इसका कॉन्करेंट पॉइंट बाहर जा रहा है क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. यहां से भी अगर देखोगे तो ये तीनों वर्टाइसेस यू विल फाइंड एट द equal distance. Okay, some more extra information is given already, which I explained it. The angle bisectors of a triangle are concurrent. Their point of concurrence is called in center. I का मतलब क्या है? In center. Already I explained it before. In center. In center का मतलब क्या है? अगर इस पॉइंट से अगर आप लोग अगर सर्कल निकालते होते, it touches all the three sides of the triangle. Means what? All the three sides are at equal distance. This property we have learned in that. Then the second point is the perpendicular bisectors of the sides of a triangle are concurrent. Perpendicular bisector जो होती है ट्राइंगल की वो concurrent होती है. ठीक है, होती है. उस पॉइंट को नाम क्या दिया जाता है? C. Their point of concurrence is called the circumcenter. Okay, C नाम क्यों दिया जाता है? Because its name is सर्कमसेंटर. सर्कमसेंटर का मतलब क्या है? यहां से अगर सर्कल निकालते हो इस सर्कमसेंटर पॉइंट से, तो इट टचेस ऑल द थ्री वर्टाइसेस. मीन्स व्हाट? ऑल द थ्री वर्टाइसेस आर एट इक्वल डिस्टेंस. राइट? सो इट इज कॉल्ड एज सर्कमसेंटर. सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स, इन सेंटर एंड सर्कमसेंटर. नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 1. दिस आई विल एक्सप्लेन इट इन द नोटबुक. So here it is practice set number 1. Question number 1 is written, draw line segments of lengths given below and draw their perpendicular bisector. Okay, line segment निकालनी है और उसकी perpendicular bisector निकालनी है. Okay, so draw a line segment of what is the length given? 5.3 centimeter. तो 5.3 centimeter की निकालो. यहां से कहां तक? 5 क्या आ गया? 1 2 3 यहां तक. Right? 5.3 centimeter. Name the line as A and B. Okay, उसको नाम दिया AB. Then with the help of compass, टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस. आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना है. ओके, देन ड्रॉ एन आर्क हियर दिस साइड एंड ड्रॉ एन आर्क वन टू द डाउन साइड. ओके, दोनों साइड में द सेम वे रिपीट द सेम प्रोसेस फ्रॉम द पॉइंट ए. पॉइंट ए से वही प्रोसेस रिपीट करनी है. ड्रॉ द आर्क हियर दिस साइड. हियर दीज टू आर्क शुड इंटरसेक्ट ईच अदर. हियर ऑल्सो सेम थिंग, it should intersect. Okay, now because of this we got a point of intersections at two places here. Join these two points. ये दोनों पॉइंट को क्या करना है? ज्वाइन करना है. Okay, this line is called as perpendicular bisector. Okay, name these points. Suppose this point we will name as C, this point we will name as D. Okay, यहां पर थोड़ा सा यहां से जाना चाहिए था. ओके, थोड़ा सा गलत हो गया. ओके, देन सेकेंड एग्जाम्पल इज टेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.7 सेंटीमीटर. तो ले लो 6.7 सेंटीमीटर लेते हैं यहां से. ओके, यहां से ये 0 एंड 6.7 यहां तक. राइट, दिस इज द सेगमेंट 6.7 centimeter. Now name this segment. Suppose this we name it as P and this point as Q. Okay, pen is not allowed in the
construction. Remember everyone, here I am using pen only because of that you should be able to see it clearly. Okay, यहाँ पर ये clarity नहीं आ रही है. Okay, इसलिए so I have used pen only for writing the names. Okay, or else for remaining construction I am going to use pencil only. Okay, now next step is take more than half distance. आधे से ज़्यादा distance लेना है. Okay, and then make arcs to both the sides. दोनों साइड को आर्क ले लो. ओके, राइट. अगेन रिपीट द सेम प्रोसीजर फ्रॉम द पॉइंट पी. टेक आर्क टू द बोथ द साइड सो दैट द सेकंड आर्क शुड इंटरसेक्ट द फर्स्ट वन. ओके, यहां पर इंटरसेक्शन मिलना चाहिए दोनों जगह पर. देन द लास्ट मेथड, द लास्ट पॉइंट इज, और द लास्ट स्टेप इज join the intersections. Join the intersection. Okay, you will find that this angle measures exactly 90 degree. Okay, name these two points as, suppose PQ, this point is as R, this point as S. Right, here two examples are over. The third example of this first question is 3.8 centimeter. Okay, name these as L, M. Okay, again the same method. Take more than half distance of LM in the compass and make arcs to both the sides. Right, repeat the same procedure from the point L. पॉइंट एल से वापस वही मेथड रिपीट करो. राइट, देन जॉइन द टू पॉइंट्स, दिस टू पॉइंट्स विच वी गॉट बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टू आर्क्स. जॉइन दोस टू पॉइंट्स. Join 2 points. Okay, name these points as LM, this N and this O. Okay, this angle if you measure, it measures 90 degree. Okay, if you measure this distance, it will measure exactly 1.9, this 1.9. Okay, half distance here. Right, then question number 2 is there. Draw angles of the measures given below and draw their bisectors. Okay, ये 3 एंगल निकालने हैं और उनकी बाइसेक्टर निकालनी है. Yes, students, here 3 angles are drawn here. Here measure of this angle is 105 degree. Measure of this angle is 55 degree. Measure of this angle is 90 degree. This first triangle is named as, first angle is named as angle XYZ. We have to draw its angle bisector. Okay, according to our whatever procedure is fixed. Okay, as per the procedure, first fix the steel point on the vertex. Okay, then take sufficient distance and then take an arc. अगर आर्क नहीं लेना है आप लोगों को, ओके, तो यहां पर या तो पूरा आर्क बनाओ, नहीं तो दोनों आर्म्स पर ऐसा आर्क. दोनों आर्म्स पर अगर ऐसे आर्क बनाए तो भी चलता है. ओके, देन अगेन टेक सफिशिएंट डिस्टेंस, यानी आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लो. ओके, और यहां से ये स्टील का पॉइंट इस इंटरसेक्शन पर फिक्स करो. ओके, यहां पर फिक्स किया और यहां से एक आर्क बनाओ. बना. Repeat the same procedure from this point. ये ऐसा करने से we get a point of intersection here. Okay, and join this point of intersection with the vertex. Vertex के साथ join करो. This is called as angle bisector. Okay, name it as suppose XYZV. Right, the same method now repeat it with the angle
ABC, angle ABC. इसके साथ करो. Now here I will draw complete arc. Complete arc निकालता हूँ. Okay, complete arc is drawn. Okay, now from this, now the point, from this point of intersection, draw an arc. Okay, this way. With the same distance आप चेंज किए बिना यहाँ से from this point of intersection draw the arc. Okay, because of this you get the point of intersection this. Okay, join the vertex and that point of intersection. Okay, this is called as angle bisector. Now let us come to angle number 3, angle LMN, which measures 90 degree. For this also same method is there. Okay, same method follow करनी है. Fix the still point on the vertex of the angle, then with proper distance take an arc. Okay, arc is taken, then with proper distance again, थोड़ा सा आधे से ज़्यादा distance लेना है. Okay, take an arc and repeat the same procedure from this point. Okay, we got the point of intersection. Point of intersection important है और कुछ नहीं. Okay, and let us join it. Let us join the vertex and the point of intersection. This is called the angle bisector. Let it name as LMN. Suppose this O. Okay, this means this point of intersection should be O. Okay, this is all about question number 2. Now let us move to question number 3. Draw an obtuse angle triangle and a right angle triangle. दो triangle निकालने हैं, obtuse angle triangle, right angle triangle. Find the points of concurrence of the angle bisectors of point of concurrence निकालने हैं of each triangle, and where do the points of concurrence lie? So in question what is given? Draw an obtuse angle triangle. This obtuse angle triangle is drawn. Right angle triangle we will draw after this, and we have to find the point of concurrence of एंगल बाइसेक्टर. यानी हमें अब ये तीनों एंगल्स की क्या निकालनी है? एंगल बाइसेक्टर. नाउ ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली. नाउ हियर दिस एंगल बाइसेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द एंगल बी. ओके, यानी यहां से एक आर्क लिया. ओके, इस आर्क से यहां से एक आर्क, यहां से एक आर्क. ओके, दिस एंगल बाइसेक्टर इज ड्रॉन. देन फ्रॉम द पॉइंट सी हियर आर्क वाज टेकन. Okay, and from this arc here arcs were taken. From here arcs were taken. Okay, and here angle bisector is drawn of angle C. The same procedure is done for angle A, right? And here all these three angle bisectors, they meet each other inside the triangle. Okay, this point is named as I. जो एंगल बाइसेक्टर का जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, दैट इज द पॉइंट I. नाउ we will move to second figure. Okay, this is a right angle triangle. Name of the triangle is PQR. Now we have to draw angle bisectors of these three angles of the triangle. Okay, here are the three angle bisectors of this right angle triangle PQR. ओके, एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाली अब तुम लोगों को समझ में आया ही होगा. एंगल आर से, ओके, यहां से पहले ये आर्क निकाला. ओके, यहां से ये आर्क मिले, ये दोनों साइड. ओके, इन दिस वे दिस एंगल बाइसेक्टर इज ड्रॉन, दिस एंगल बाइसेक्टर इज ड्रॉन, दिस एंगल इज बाइसेक्टर इज ड्रॉन, एंड दिस एंगल बाइसेक्टर्स दे intersect each other at this point. This point is called as point I. Right? Now let us move to question number 4. Draw a right angle triangle
ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालनी है किसकी? वो ट्राइंगल के साइड्स की. एंड वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई, और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ मिलता है? दिस वी हैव टू शो. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस फिगर, this is triangle ABC whose measure of angle B is 90 degree, right? Then perpendicular bisector of the sides are drawn. Okay, यानी ये साइड AB की perpendicular bisector. Okay, this angle measures 90 degree. Okay, then this is the line M. Line M is the perpendicular bisector of side BD. Then line N is the perpendicular bisector of side AD, right? So these are the perpendicular bisectors of the sides. Okay, now these three perpendicular bisectors, they intersect each other at a point. एक ही point से जाती है, they are concurrent. Okay, this point is named as C. What is the meaning of C here? अब ये perpendicular bisector है. Okay, इसका पॉइंट का नाम C है, concurrent point of concurrence का. So it is called as circumcenter. Okay, यहाँ से अगर distance CA, CB, CD मेजर करोगे तो you will find it equal. Okay, so the point of concurrence lies on the hypotenuse. This is the answer of this. Everyone has to practice this. सबने प्रैक्टिस करनी है, not only to see the video and to just understand it. Understand नहीं, just you have to practice it. Now let us move to question number 5. What is question number 5? Maithili, Shaila and Ajay live in 3 different places in the city. वो एक शहर में 3 जगह पर रहते हैं. A toy shop is equidistant फ्रॉम द 3 हाउसेस. उनके तीनों के भी घर से एक दुकान है, टॉय शॉप. ओके, तो वो तीनों के घर से सेम डिस्टेंस पर है. देन विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस एंड एक्सप्लेन योर आंसर. ओके, सो हियर वन डायग्राम इज ड्रॉन. ओके, what I have considered that Maithili is staying at this place. Okay, Ajay is staying at this place and Shaila is staying at this place. Okay, these 3 points I considered as the 3 vertices of the triangle and I drew a triangle. एक triangle बना लिया. Okay, अब यहां से क्या दिखाना है? चौथी the fourth thing what is remaining, that is toy shop. तो toy shop should be at such a place. वो toy shop ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां से अजय का घर, मैथिली का घर और शैला का घर सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए. अगर ऐसा कुछ दिखाना है, ऐसा पॉइंट, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ता है? विल हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द 3 साइड्स. तीनों साइड की क्या निकालनी पड़ेगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एंड देन द पॉइंट वी विल गेट द पॉइंट सी, दैट इज सर्कमसेंटर. सर्कमसेंटर की प्रॉपर्टी हमें मालूम है, सर्कमसेंटर इज at equal distance from the 3 vertices. तीनों vertices से equal distance पर होता है, right? So what is the answer? A toy shop that is circumcenter which is equidistant from the vertices, 3 vertices of a triangle, can be obtained by drawing the perpendicular bisector of the 3 sides of the triangle. This is the answer of this question. Here the practice set gets over. I will come afterwards with a new video with the next point.